Audio Jungle. In this video, I'll be explaining the mechanism of urine formation or physiology of urine formation. Now, where does this urine formation occur? It occurs in the functional unit of kidneys, which is nephron. And each kidney has about approximately 1 million nephrons, which are filtering blood, and the urine is being formed. So let's see how this urine formation is occurring. Now this urine formation, it involves three processes. First is filtration, second is reabsorption, and third is secretion. First we'll discuss about filtration. Filtration में क्या हो रहा है? जो fluid है in running in the glomerular capillaries, it enters the Bowman's capsule. This process of fluid entering the Bowman's capsule is called filtration. और इस filtration में कौन क्या क्या involved है? Glomerulus and the Bowman's capsule, that is the renal corpuscle. So this renal corpuscle is called basic filtration unit of the kidneys, क्योंकि यहाँ पे filtration जो कि first process of urine formation occur हो रहा है. Now once the fluid that has entered the Bowman's capsule, this fluid is called glomerular filtrate. Fluid में क्या क्या है? This fluid contains water, it contains nitrogenous waste, that is urea, uric acid and creatinine, and it contains nutrients, the glucose and amino acids and the ionized salts. अब है प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन. मतलब फिल्ट्रेशन हो कैसे रहा है? जो प्रेशर है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर इट फोर्सेस द फ्लूइड्स एंड सॉल्यूट्स थ्रू अ मेम्ब्रेन. जो ये प्रेशर है उसकी वजह से ये फ्लूइड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बोमेन्स कैप्सूल में एंटर कर रहा है, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल रहे हैं. अब ये किस वजह से हो रहा है? कौन सा प्रेशर है? दैट प्रेशर इज ग्लोमेरुलर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो कि फर्दर 3 प्रेशर्स पे डिपेंड कर रहा है. पहला कौन सा प्रेशर है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में प्रेशर है. जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो यहाँ पे रन कर रही हैं, उनके अंदर जो ब्लड है उसमें जो फ्लूइड है उसका प्रेशर है, दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड इट प्रमोट्स फिल्ट्रेशन. वो क्या कर रहा है? मूवमेंट ऑफ फ्लूइड को ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बोमेन्स कैप्सूल में इसकी प्रमोट कर रहा है, इस मूवमेंट को. देन सेकेंड प्रेशर, द सेकेंड इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये इस प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है. और ये किस में है? जो ये बोमेन्स कैप्सूल में फ्लूइड है, इसके अंदर जो ये प्रेशर है उसको बोल रहे हैं हम कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड इट अपोजेस फिल्ट्रेशन. वो इसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, इस प्रेशर के अगेंस्ट. थर्ड प्रेशर इज ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, which is due to the presence of plasma proteins in the blood, the albumin, the fibrinogen. इनकी वजह से जो प्रेशर है, that is the blood colloid osmotic pressure, and this also opposes filtration. So हमारे पास 3 प्रेशर्स हैं, जिनमें से सिर्फ एक प्रेशर है जो प्रमोट कर रहा है फिल्ट्रेशन को, बाकी दोनों अपोज कर रहे हैं. ना ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इसको अपोज कर रहा है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी अपोज कर रहा है. सो एंड में क्या हो जाता है? जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, व्हाट इट कम्स आउट टू बी? इट कम्स आउट टू बी 10 मिलीमीटर मर्करी. हाउ डू वी कैलकुलेट इट? What do? We take glomerular hydrostatic pressure minus the sum of capsular hydrostatic pressure and osmotic pressure. Means इस प्रेशर में से इन दोनों को माइनस कर देना है. और ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है? 55 मिलीमीटर मर्करी. इसमें से जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसकी कितनी वैल्यू है? 15 मिलीमीटर मर्करी. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है 30 मिलीमीटर मर्करी. सो हम दोनों को ऐड करें, 30 प्लस 15 कितने बन गए? 45. इन दोनों को इससे माइनस कर देंगे, मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 55 एंड वी गेट 10 millimeter mercury, which is the effective filtration pressure, and this is about the glomerular net filtration. Second process is tubular reabsorption. Now where does it occur? It occurs in the PCT, the loop of Henle and DCT. Now in PCT, what is this reabsorption first? In reabsorption, what happens?
It is the movement of substances from the tubules back to the blood capillaries. And these blood capillaries are located around this tubules, which are called the peritubular capillaries. So now what happens? From the filtrate that has entered the PCT, 100% of glucose, it goes to the blood capillaries, 100% amino acids, 80 to 90% of bicarbonate ions, 65% of water, sodium and potassium ions, and 50% of chloride ions. From the PCT, they move to the blood capillaries. They move back to the blood capillaries. That is why the term reabsorption. They are reabsorbed back to the blood. And from the loop of Henle, 10 to 20% of bicarbonate ions, 15% of water, filtered water reached to the loop of Henle, 20 to 30% of sodium ions, potassium ions and calcium ions, and 35% of chloride ions, they enter back to the blood capillaries from the loop of Henle. And the reabsorption in distal convoluted tubule, the distal convoluted tubule, it reabsorbs 10 to 15% of filtered water. So this is about the reabsorption. That is all the filtrate which has entered the Bowman's capsule as it passes through PCT, loop of Henle and DCT. These are all substances which enter back into the blood. Means these all substances will not enter. Third process is secretion, also known as tubular secretion. Now it removes materials from the blood and add them to the filtrate. Now it's a process in which the certain unwanted materials, certain drugs, they enter the PCT and DCT and they become a part of the urine. Now where does the secretion occur? In the PCT and DCT. Now hydrogen ions or ammonium ions, they move from the blood to the PCT or they enter the filtrate. And hydrogen ions, potassium ions, ammonium ions, certain drugs, they also creatinine and drugs like penicillin, they enter the DCT from the blood and they become a part of the filtrate or they become a part of the urine. Now what are the functions of the secretion? There are two main functions of the secretion. One is that it rids the body of certain materials, because some unwanted materials from the blood, they enter the filtrate and then become a part of urine and are thrown out of the body. And second is they help to control the blood pH by throwing out these hydrogen ions. You know, these hydrogen ions, what do? They lower the pH. So if whenever the blood pH is lowered, the excess of hydrogen ions, they are secreted into the filtrate and thrown out in urine. In this way, the secretion process helps to control the blood pH. This is all about the physiology of